A very good morning to everyone. Let's start with our new chapter, that is food safety. Now it's quite interesting and very important chapter because the food is the basic necessity of living things, and we have to see to it that food has to be consumed safely because there are various side effects observed if unwanted food material gets into the body. Now, before we start with the chapter, we know that like we eat a different type of food. Jowar, wheat, bajra, rice, they contain carbohydrates, and carbohydrate gives us the energy and glucose. Beans and pulses gives us protein to work properly. Bodybuilding helps with the help of protein. Oil and ghee also gives us a protein. Fruits and vegetables are very important for vitamins, and they are also helpful for proper excretion process. Now, these are the different food materials we get from the farms, or some we get from the animal. Fine. Now, all the constituents of food, carbohydrate, protein, fats, vitamin, mineral, fiber, are necessary for the proper growth of the body. We get these nutrients from food material like wheat, jowar, pulses, rice, fruits, etc. However, what will happen if these food material are infested by insect? Infested मतलब खराब हो गया insect के वजह से, or spoiled anyway. So let's see what are the factors for responsible for food spoilage. क्या क्या चीज़ों की वजह से food spoilage हो सकता है? Sometimes फ्रूट और देयर स्किन टर्न्स ब्लैक. अभी हम लोग ने देखा है कि अगर बनाना हम लोग ज़्यादा दिन ला के घर में रखेंगे तो वो पकने के बाद उसका जो स्किन है वो ब्लैक टर्न होना चालू हो जाता है. सम फूड स्टफ गिव अ फाउल और बैड ऑर्डर. रात का खाना अगर हम लोगों ने ठीक से रखा नहीं है तो वो खाना सुबह उसके ऊपर अगर फंगस आ गया तो इट गिव्स अ वेरी बैड स्मेल. सच फूड स्टफ्स आर नॉट सूटेबल टू eat because they're very dangerous. Sometimes naturally available food material are spoiled by wrong handling as they are overcooked or improperly stored. Say in the damp place. Damp place मतलब जहाँ पे थोड़ा गीला एरिया है वहाँ पे अगर हम लोगों ने वो रखा हुआ है, जैसे गोनी भर के चावल है तो उसमें सब इंसेक्ट हो जाते हैं. In such cases, the quality of food material deteriorates. Deteriorate होना मतलब उसका क्वालिटी जो है वो कम कम होता जाना. They may also be spoiled during transportation. Can give much more example for food spoilage. ट्रांसपोर्टेशन में कैसे होता है, वो गोनी भर के एक दुकान में से अगर ट्रक में भर रहे या ट्रक में से दुकान में भर रहे तो इन दैट केस वो फट जाता है और हर जगह जगह पे फूड गिर जाता है. सो दिस इज़ अनदर way of spoiling the food. The foodstuff we consume, whether of animal or plant source, must be the best quality. Otherwise, we may fall prey to disease or illness. Food is said to be spoiled if there is change in color, odor, texture, quality, taste, and there is a loss of its nutrient. तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर है, when the food is said to be spoiled, the answer is there in the yellow box, so you are going to write this answer. Let's move further. On a day out with friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, shev puri, pav bhaji, vada pav, pizza, and so on. But have you ever seen how they were made, where they displayed, served hygienically, what was the source of water for preparing, discuss with the science teacher. ये सारी चीज़ें कैसी बनाई जाती है, कहाँ रखी जाती है, कैसे कुक होता है, कभी हम लोगों ने उसके बारे में सोचा है? नहीं. Which fruit in the picture appears to be good to eat and why? अभी देखो वो जो ऑरेंज है, ऑरेंज ख़राब हो गया है ना, तो ऑरेंज हम लोग वैसा वाला खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे. बनाना ही सीम्स टू बी वेरी ग्रीन, सो बनाना ऑल्सो विल नॉट ईट until unless it थोड़ा सा राइपन.
Then fruit turn black or change in taste, meat become sour, a peanut become rancid. Peanut मतलब सिंगदाना, सिंगदाना कड़वा हो जाता है, rancid is कड़वा. All these changes occurs due to factors within the food material. Often, food grains etc. produced in the farms are damaged due to various reasons by improper handling, improper storage, improper transportation etc. Some foodstuff like meat and milk, either acidic or alkaline, they get spoiled due to chemical reaction on contact with metal. Sometimes foodstuff may spoil due to contamination by microorganism और इंसेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर वाटर एंड सॉइल. तो हमको क्या करना है, वी हैव टू लाइक फूड वेस्टेज को पहले कम करना है एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फूड. सो व्हाट ऑल थिंग्स वी विल डू with the help of science and technology. India has shown great progress in the production of various foodstuff like cereals, fruits, vegetable, fish, as well as milk and the milk products. Even so, many people in our country and all over the world face the problem of hunger. Many do not get even one meal in a day. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है. Hence, it is our duty to prevent wastage of a food wherever it takes place. Now, quantitative wastage of food. Quantity and quality is different. Quantitative wastage कैसे रोकेंगे, देखो. Wrong method of farming like hand sowing of seeds, inadequate threshing. Threshing करना मतलब जब भी पक जाता है तो उसको कट करते हैं ना प्लांट्स को. Improper storage, उसका स्टोरेज ठीक से किया नहीं. Wrong method of distribution of some reasons of qualitative wastage of a food. Beside, much food is wasted as a result of custom offering, serving to the food guests, traditional feast, banquets. बहुत बहुत ज़्यादा पैमाने पे खाना बनाना, शादियों में फूड का वेस्टेज होना. फिर यू माइट हैव सीन शादियों में वो अक्षदा भी डालते हैं, उसमें भी kgs and kgs food is getting waste. So we have to stop this traditional methods. Now look at a qualitative wastage of food. How using wrong method of protecting food, excessive use of food preservative, overcooking, washing the vegetable with cutting them, mishandling, and fruit like grapes and mangoes, miscalculation. फ्रूट्स अगर मैंगोज़ और ग्रेप्स को हम लोग ने ठीक से हैंडल नहीं किया तो वो ख़राब हो जाता है हैंडलिंग में. सो ऑल दीज आर क्वालिटी, उसका क्वालिटी हम लोग ख़राब कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में और उसको ठीक से न ही रख रहे हैं, तो वो भी हमको प्रोटेक्ट करना है. व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज. हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्व योर सेल्फ एज मच एज यू कैन ईट. हमको उतना ही खाना है जितना हमको हमारी भूख है. अवॉइड ओवर कुकिंग ऑफ द फूड, फूड को ज़्यादा कुक नहीं करना है. Avoid throwing the leftover food, reuse it in a proper way. Buy only as much as grain, vegetable, milk that you need. Avoid temptation of making excessive purchase. घर में ज़्यादा स्टोरेज करके रखना गलत बात है. Store grains and other perishable food stuff like vegetable, fruits, milk etc. using proper method. चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल्स, कैन पैक फूड. जो भी सॉसेस का बॉटल्स है घर में, जो भी कैन फूड आता है उसका हमेशा एक्सपायरी डेट देखना है. एक्सपायरी डेट के बाद उसको खाना इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ. ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व्ड योर सेल्फ. सो यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर, दिस येलो बॉक्स. व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड फूड स्पॉइलेज. नेक्स्ट टू दैट, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. हम लोग को फूड कैसे स्टोर करना है. देयर आर वेरियस टेक्निक्स of storing the food and which we are following. या मम्मी मेक्स पापड़, अचार, मालूम है आपको. तो वो जो है ड्राइंग, ये सब मेथड से, वो मेथड से हम लोग फूड को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. सो दीज आर द सम टेक्निक्स लाइक